Let's start with a very important topic, endophthalmitis. Endophthalmitis is defined as an inflammatory condition of the intraocular structures. This particular definition is given in Jitoe. A better definition is to define endophthalmitis as an inflammatory condition of the intraocular cavities, that is the aqueous and or the vitreous humor, and this is normally caused by infection, although there are certain cases of sterile endophthalmitis too. The thing to understand is that the majority of cases of endophthalmitis are exogenous, and what this means is that in most cases the inoculation of the organism happens from the outside, either via trauma, via cataract surgery or other forms of eye surgery, or via extension of keratitis, which is an infection of the cornea. Minority of cases of endophthalmitis are endogenous in origin and are generally because of bacteremic or fungemic seeding of the intraocular cavities. So this was a very major concept. Now let's talk about the causative agents. By far the most common causative agent are bacteria, in which gram-positive cause 90% of bacteremic ophthalmitis. Rarely, endophthalmitis can be because of fungi like Candida. Viruses and parasites do not cause endophthalmitis, and when we are referring to an infection of the eye that is caused by a virus, we tend to use the term uveitis instead of endophthalmitis. So the term endophthalmitis is reserved for basically explaining infections of the eye due to bacteria or due to fungi. I will repeat the basic concept. The majority of cases of endophthalmitis are due to bacteria. The minority of cases are due to fungi. As for the mode of transmission, the most common mode is exogenous, and only a minority of cases are due to endogenous pathogens. ठीक है? Move forward. I basically made it like this, so you'd be able to appreciate the causative agents: bacteria, in which 90% are due to gram-positive, and fungi, although rarely. I've also mentioned over here the majority of cases of endophthalmitis have an exogenous mode of transmission, in which the inoculation of the organism is from the outside, hence the term exogenous, यानी बाहर से. क्या क्या मोड हो सकते हैं? ट्रॉमा, जाहिर सी बात है परफोरेटिंग ट्रॉमा ही होगा. आई सर्जरी, जिसमें मोस्ट कॉमनली कैटरैक्ट सर्जरी होती है. When you will study cataract surgery, you will study its complications, and endophthalmitis is one of the most concerning potential complication of cataract surgery. And the third means of exogenous transmission is extension of keratitis. Keratitis में basically cornea पर ulcers बन जाते हैं, and if these ulcers become very deep, they can perforate inside. ठीक है? Now let's talk about this very important point, that acute bacterial endophthalmitis is something that should ring alarm bells because it is a potentially vision threatening condition. So for ease of understanding and pick up this topic in any scenario that they can give to you in UHS or in any module exam or block exam or something, you have to divide bacterial endophthalmitis into several categories, and I have underlined the most important one. For many years, the most important cause or leading factor of endophthalmitis was cataract surgery. Even now, a huge proportion of endophthalmitis is post-cataract surgery, yani a complication of cataract surgery. Hence, I basically highlighted this point. Primarily, post-cataract surgery endophthalmitis. In the scenario, they will have mentioned a patient who had cataract surgery, and within 1 week, meaning within 7 days of the surgery, the patient will present to you with signs and symptoms, which we will talk in detail about later. The second important cause is post-intravitreal injection.
देयर वाज सम प्रॉब्लम जिसके ट्रीटमेंट के लिए इंट्राविट्रस इंजेक्शन लगाया गया टू अ पेशेंट इट एंड द इंजेक्शन माइट हैव बीन एंटी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, बहुत सारी कंडीशंस में देना पड़ता है, ठीक है, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन की किसी वजह से, और इस इंजेक्शन के कुछ अर्से बाद पेशेंट प्रेजेंट किया विद साइंस एंड सिम्टम्स. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आजकल दिस इज़ अ मोर कॉमन लीडिंग फैक्टर. पहले पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी वाला सिनारियो ज़्यादा कॉमन होता था दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, नॉट स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं और इंट्राविट्रियस इंजेक्शन के बाद जो एंडोफ्थल्माइटिस है ना वो ज़्यादा कॉमन है कंपेयर्ड टू एंडोफ्थल्माइटिस फॉलोइंग कैटरेक्ट सर्जरी. इसके अलावा पोस्ट ट्रोमेटिक एंडोफ्थल्माइटिस भी काफ़ी कॉमन है. याद रखें, व्हेन वी से पोस्ट ट्रोमेटिक वी मीन परफोरेटिंग और पेनिट्रेटिंग इंजरी, नॉट ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है, और वो भी स्पेसिफिकली कोई मेटालिक फ्रैगमेंट होना तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज होती हैं. एंडोजेनस एंडोफ्थल्माइटिस भी होता है बट ये रिलेटिवली कम है. To highlight these points because this is the first thing you need to elicit in any surgery, acute post-cataract, post-intravitreal injection and post-traumatic endophthalmitis are the most common types of endophthalmitis. कौन से? Post-cataract surgery, post-intravitreal injection and post-traumatic. इसके अलावा हो सकता है हिस्ट्री हो किसी सेप्सिस की, किसी यूटीआई की, जिसकी वजह से बैक्टीरिया एंटर हुआ इनटू द ब्लड स्ट्रीम, उसके ज़रिए इवेंचुअली इन्वॉल्वमेंट होगी कोरोइड की वेसल्स की एंड बाद में इन्वॉल्वमेंट होगी आई की. दैट इज़ समथिंग विच कैन बी देयर बट मोस्ट कॉमनली एंडोफ्थल्माइटिस विल फॉलो कैटरैक्ट सर्जरी, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक ऐसा ट्रॉमा जिसमें आई वॉज पेनिट्रेटेड बाई समथिंग. अगर बेसिकली लॉस्ट फॉरेन बॉडी की हिस्ट्री होना या मेटालिक इंजरी की हिस्ट्री हो, यानी मेटल ने बेसिकली इंजर किया था आई को, तो दैट मेक्स इट इवन मोर लाइकली, ठीक है. एज आई मेंशन प्रीवियसली, बैक्टीरियल भी होता है, फंगल भी होता है. बैक्टीरिया ज़्यादा कॉमन होता है. एक्सोजेनस मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय फार मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू एंडोजेनस. डजंट मीन कि होती ही नहीं है.